Hello everyone, welcome to MBA Karo. MHCT admit cards are out, and I'm sure you must have seen your admit cards and got to know about the slots that you have got. Now, one thing about the examination, if you see the pattern over the last few years, is that the slots are not the same level. ठीक है, कुछ slot होते हैं जो बहुत easy होते हैं, कुछ difficult होते हैं. Okay, so based on the trends, what you can expect in the examination and how to deal with the difference in those. So watch this video to understand that. Now there is like nothing particular कि कौन सा slot easy आएगा, कौन सा slot difficult आएगा. That is a very subjective thing. Okay, in case you are preparing for MHCT, we have slashed the prices of our mock tests, so our mock tests are available for 300 only. So in the last few days, if you wish to practice more tests, if you are done with tests of other institutes, you can try our mocks. It's just for 300 and the link is given in the description of this video. So first of all, comment your slot. Which slot have you got? Are there 6 slots? Because last year there were 5 slots. So the examination is on 1st, 2nd, and 3rd April, and they have two timings: one in the morning, one in the afternoon. So I have got my slot on 1st April 2 p.m. 2 p.m. to 4:30 p.m. So I think 2 slots per day. So they might have 6 or might have 5 also. So depending, because not all slots, I have not got confirmation about all the slots from the students. So comment your slot. What is the slot that you got for MHCT? And did you get the same center? Because this time I am hearing that people have not got the same center also. कई लोगों को दूसरे स्टेट में भी सेंटर मिला है. So that is one thing which is a problem this time. Now, first of all, those who are going to write on 1st April, the first slot, that is the morning slot, the pattern will be known to them. Like pattern in the sense that we know there are 200 questions. So previously, like if you go to the historical part, right, they used to have 75 questions, 25 in LR, 75 in LR, abstract reasoning, QA, and VRC. Now, in that case, you had an option to choose the section. यहाँ पे ऐसे आते थे, 4 सेक्शन आते थे, तो आपको जो सेक्शन चूज करना है आप चूज कर सकते थे. फिर उनने क्या किया, फिर रिसेंटली आई थिंक आफ्टर 2020 21 से उनने मिक्स करने लगे, राइट. सो मिक्स में क्या होता था कि एक क्वेश्चन एलआर का आ रहा है, नेक्स्ट इंग्लिश का आ जाएगा, फिर क्वांट का आ जाएगा. सो मिक्स बैक ऑफ क्वेश्चंस. उसमें अनइवन भी आने लगा, एक मिक्स आने लगा, और उसमें अनइवन नंबर भी होने लगे. अनइवन इन द सेंस कि एक में एलआर 75 आ रहा है, दूसरे स्लॉट में एलआर सिर्फ 60 आ रहा है, किसी में क्वांट 45 आ रहा है, किसी में क्वांट 70 आ रहा है. सो दैट वाज अनइवन नेचर, राइट. बट इन 2024 they again came to this distribution: 75 25 50 50. They had all questions, you cannot choose section wise, but the order was the first 75 questions will be LR questions, next 25 abstract reasoning, then 50 questions of quant and 50 of VRC. So one panel itself, यहाँ पे जो numbers आते हैं 1 2 3 4 ऐसे पूरा 200 तक numbers थे, same like till 200 there were numbers. So you will have 1 to 75 will be LR. So that was the pattern. We do not know what will happen this time. Likely that they will follow this pattern where they will have section wise questions and distribution also proper, because what happens is improper distribution, कभी क्वांट में बहुत ज्यादा आ गए, किसी बच्चे की क्वांट वीक है तो वो उसमें सफर करता है. So they will have, ideally they should have the proper distribution. So we'll get to know the pattern, what kind of questions they are asking. So if you talk about that slot, right, this slot can be difficult, this slot can be easy also. So don't go with any bias कि ये slot easy आएगा, ये difficult आएगा. ठीक है. अनइवन पैटर्न अक्रॉस स्लॉट्स होंगे, राइट. अगर हम लास्ट ईयर की बात करें, दिस इज 2024 के स्लॉट्स, राइट. सो फर्स्ट जो फर्स्ट स्लॉट था वो बहुत इजी आया था, सेकंड मॉडरेट था, थर्ड इजी था, फोर्थ काफी डिफिकल्ट था, फिफ्थ स्लॉट इजी आया था. सो अगर इस बात के, लाइक इफ इट इज वेरी इजी, so you will need maybe 180 plus for JBMS. So I'm talking about JBMS. So 180 plus भी sufficient नहीं हो रहा था किसी किसी में, फर्स्ट स्लॉट में, like people were getting 180 plus but did not get that high percentile. So very easy in the sense that there is no RC, right. Synonym antonym easy question पूछे हैं, right. DI नहीं है, calculation based question नहीं है, straight forward questions हैं, puzzles are very less. ओके. सो अगर पजल ही नहीं है तो टाइम ज्यादा नहीं लगेगा, फटाफट आप सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लोगे. स्लॉट 2 वाज स्लाइटली मॉडरेट, 3 वाज अगेन इजी, ओके, नॉट वेरी डिफिकल्ट, फोर्थ वाज वेरी डिफिकल्ट.
राइट. सो इस स्लॉट में लाइक पीपल वर स्ट्रगलिंग टू गेट 120 प्लस वन, लाइक इफ यू टॉक अबाउट 120 130 भी इसमें स्कोर करना बहुत मुश्किल हो रहा था. मॉडरेट यू वुड से अराउंड 145 150, राइट, और यू कैन से दिस इज अप्रोक्सीमेटली 160, राइट. इन स्लॉट्स में 160 160 लोगों के बन रहे थे. इसमें 145 150 कुछ रेंज किया होगा. इसमें 120 30 से ऊपर बहुत रेयर स्कोर गया, बिकॉज इट वॉज वेरी डिफिकल्ट. इसमें कैट जैट से कॉपी किया हुआ था. दैट वॉज द सीन लास्ट ईयर. नाउ दैट डज नॉट मीन कि like the thing will repeat this year also. Okay, ऐसा नहीं होगा. Hopefully they will improve this time, but there will be uneven pattern and difficulty level. ये तो आप मान के चलो कि uneven pattern होगा. तो किसी एक स्लॉट को आप कॉपी करके नहीं जाना. आप जैसे मान लो फर्स्ट स्लॉट में 3 DI आ गए, सो इट इज नॉट नेसेसरी दैट यू विल गेट 3 DI सेट्स. हो सकता है आपको उसमें बस एक DI सेट आए. ओके, या पजल्स किसी उसमें ज्यादा आ गए कम आ गए, सो इट विल बी अनइवन. सो यू हैव टू बी वाइज, ओके, इन अटेम्प्टिंग. डेफिनेटली अटेम्प्ट तो आपको पूरा करना है, बट यू नीड टू मैक्सिमाइज योर राइट अटेम्प्ट. तो आपको ये नहीं सोचना कि यार ये मेरा लाइक सपोज फर्स्ट स्लॉट वाले बच्चे एग्जाम दे के आए, वो कह रहे कि 140 बहुत ज्यादा है, या कोई एनालिसिस कर रहा है, ठीक है, एनी इंस्टीट्यूट इज डूइंग एनालिसिस, दे आर सेइंग 140 विल बी सफिशिएंट. हो सकता है सेकंड स्लॉट बहुत इजी आ जाए. तो डू नॉट गो विद एनी टारगेट कि आपको 140 अटेम्प्ट करना है. मे बी आपके स्लॉट में 170 आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, जेन्युइन अटेम्प्ट को लाना पड़ेगा. और on the other side, let us say one paper was difficult. Do not think that your paper like one paper was easy. Don't think that your paper will also be easy. So उसमें आपको पैनिक नहीं करना. अगर बहुत लंबे लंबे पजल्स आए and all that, so remember that slot wise it is going to be the same for all the students of your slot. So attempt accordingly, right. If there are puzzles, which puzzles to attempt, which to skip, you should know. अगर आपने ढंग से प्रैक्टिस की तो आप समझ जाओगे कि हाँ ये फंसाने वाला पजल लग रहा है, इसमें ज्यादा पैरामीटर है और इट इज अ कैलकुलेशन इंटेंसिव DI, we will avoid it. If there is some topic which is unfamiliar, sometimes it happens they give questions from unfamiliar topics, like number system के advanced questions पूछ लेते हैं, ठीक है. Maybe from permutation combination they might ask difficult questions. Geometry algebra also sometimes they ask questions. So if it is unfamiliar, then very likely it will be unfamiliar for others also. So do not panic in any of those situations. So basically you have to maximize your performance in any slot, because slot wise normalization, they say that it happens, but normalization is a big lie in this examination. So it is not to spread negativity, but to give you the real picture. Because don't go with very high hopes. Some people go with very high hopes, right, and say that कि अरे मेरा तो बहुत अच्छा हुआ था, और वो हर साल की स्टोरी है, राइट. आप बहुत अच्छा करके आते हो लेकिन आपका वो, it's highly luck based examination. So try to give your best, but do not कम इनटू प्रेशर. लाइक बाद में आपको बहुत ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं तो अच्छा करके आया था, करके आई थी, बट स्कोर नहीं आया, बिकॉज इट इज हाईली लक बेस्ड. नॉर्मलाइजेशन, दे से देयर इज नो ट्रांसपेरेंसी. फॉर द पास्ट फ्यू इयर्स अर्लियर दे यूज्ड टू रिलीज द लिस्ट आल्सो. सारे कैंडिडेट्स की लिस्ट आती थी, चाहे 80,000 लोगों ने दिया, 1 लाख लोगों ने दिया, पूरी एक PDF आती थी, सबके नाम और स्कोर आते थे. ओके, सो देयर वाज ट्रांसपेरेंसी की हु इज द टॉपर. बट नाउ दे हैव नो ट्रांसपेरेंसी, पता ही नहीं चलता कि कौन टॉपर है. सो देयर इज सम थिंग गोइंग behind which we are unaware of, and they have promised this time that they found some people who were scamming others, okay, and they have arrested also some people who were doing malpractices. So let's hope that this time the paper is fair and transparency थोड़ी बढ़नी चाहिए, normalization better होना चाहिए last year से. So don't worry about these things. Do not target any score, just maximize your performance. और जैसे मैंने बताया कि easy paper होगा. Easy means no RC or very short RCs, short and easy to read, जिसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस है, या फिर लेस पजल्स. जस्ट लेट अस से आपके उसमें सिर्फ 2 से 3 पजल्स आए हैं, ठीक है, या एक भी पजल नहीं है. मिसलेनियस क्वेश्चन ज्यादा है, इजी पजल्स हैं. इट इज जस्ट सेइंग दैट 8 पीपल आर सिटिंग अराउंड अ सर्कल, नो अदर पैरामीटर गिवन. और लाइक लेस कैलकुलेशन. एक होता है कि कैलकुलेशन इंटेंसिव होते हैं, तो ये आपको डिफरेंशिएट करना होगा. सो द स्कोर शुड गो अबव 180 इन सच केस. अगर ऐसा इजी पेपर आता है तो 180 प्लस. लास्ट ईयर का पेपर 1 देख लेना, स्लॉट 1 का. सो आई गिव यू लाइक 2024 पेपर्स आर अवेलेबल ऑनलाइन.
And like if you see slot 1, you should be able to score 180 plus for JBIMS. Accordingly, different institutes will have different cutoffs. Now if it is moderate, so maybe 150 to 160 could be the score needed to get into JBIMS. Now that involves there are more puzzles, right? There are some RCs also. And if it is difficult, difficult means काफी calculation intensive questions आ गए, right? बहुत सारे puzzles आ गए. Almost everything is puzzles, very long puzzles, right? They are saying 10 people sitting in a row. Their profession is also given. Some people facing inside, some people facing outside. So lengthy puzzles, like I hope when you solve questions, when you practice, you know कि कौन सा easy होता है, moderate होता है, difficult होता है. तो अगर difficult paper है, so maybe 120 130 would be the ideal score for JBIMS, right? So just do not target any score, but while looking at the paper, realize कि ये paper का level कैसा है, उस according आप attempt करो, panic मत करो, and remember that attempt all questions. Okay, there is no negative marking. दिस थिंग यू नीड टू कीप इन माइंड. अगर मान लो डिफिकल्ट पेपर है, आपने 100 जेन्युइन कर लिए, ठीक है, फिर आपने 100 फ्लूक्स मार दिए, तुक्के मार दिए, हो सकता है आपके इसमें से 15-20 या 25 कुछ सही हो जाए और आप इस रेंज में आ सकते हो. सो ट्राई टू अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस इन एनी सिचुएशन. अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस. इफ इट इज इजी पेपर, डू नॉट थिंक दैट दिस विल बी द कट ऑफ. ट्राई टू grab as many marks as possible. If it is moderate, attempt wisely. And if it is difficult, then you have to be very selective. आपको बहुत selective होकर attempt करना है. आप section wise strategy बना सकते हो. Let us say आपको लगा कि इंग्लिश में बहुत लंबे पैसेज जैसे डिफिकल्ट टू रीड है, इंग्लिश सेक्शन से कम, बहुत कम क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, बाकी सेक्शन से मैक्सिमाइज करो. क्वांट इज वेरी लेंथी, कैलकुलेशन इंटेंसिव, स्किप दोस क्वेश्चंस, अटेम्प्ट इन अदर सेक्शंस. सो इस तरह से आपको अटेम्प्ट करना है एंड ट्राई टू गिव योर बेस्ट इन द एग्जामिनेशन. Now, wish you all the best for this examination. Generally in other examinations में क्या होता है, others में आपको होता है 90% आपके प्रिपरेशन होती है और 10% लक होता है. लक फैक्टर भी प्ले करता है थोड़ा बहुत, बस इसमें उल्टा हो जाता है, राइट? सीईटी में आपको 10% ही प्रिपरेशन काम आएगी, और मे बी चलो 10 से थोड़ा ज्यादा देता है, 20% प्रिपरेशन और 80% लक. 80% लक ये भी कह रहा हूँ क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ है, बहुत कम सीट्स हैं, राइट? And the number of test takers is very high, and especially if you're non-Maharashtrian, then obviously it will become 10% preparation and 90% luck, right? So wish you all the best for the examination. Just try to give your best. Now if you wish to see that how to attempt a paper, right, so we had one video, so probably I'll attempt another test also in the coming days, in which you can see that how to attempt a mock test in a way to maximize your attempts in the examination. And we ran one revision series for CET on our channel. Some of you must have watched it. जिन्हें नहीं देखी वो देख लेना, काफी हेल्पफुल सीरीज होगी. इसमें हमने सारे सेक्शंस कवर किए थे. वी हैड डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस. क्वांट में DI करा था, राइट? एंड वी डिड puzzles, we did high level DILR, like that is asked in CAT, right? So if you go through this series, that will definitely benefit you. You will learn how to solve questions in a better manner, which questions to skip, which questions to avoid. तो ये सीरीज आपको मिल जाएगी. आपको अपने हमारे चैनल की प्लेलिस्ट चेक करनी है. MHCT MBA 2025 डेली ड्रिल करके है, और इसके PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे. ओके, सो यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप एंड यू कैन गेट द PDF ऑल्सो. तो आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल जाएंगे. अराउंड 20 वीडियोस थे, तो 20-25 क्वेश्चंस पर वीडियो. सो आपको 400-500 क्वेश्चन प्रैक्टिस के मिल जाएंगे, क्वालिटी क्वेश्चंस फॉर CET. And if you want some marathon sessions for CET, so there are some days left for the examination, we can take some marathon sessions. Please like this video, right? If we get 500 plus likes on this video, and आपको comment करना है MHCT revision, ठीक है? अगर आप यहाँ पे 200 comment आ जाते हैं, ठीक है, और 500 plus likes हो जाते हैं, so we will get to know that these many people are interested, then only we will hold these marathon sessions, because we are putting efforts. We also want that students are engaged. Like if there are people are not interested, why will we put our efforts for it? So if you want marathon sessions, comment MHCT revision on this video, and please like this video. So if you get 200 plus comments of MHCT revision, we will have a marathon series in the coming days, so that it will help you learn how to solve different kind of questions
और डेफिनेटली इससे हेल्प मिलती है। कई बार ऐसा होता है कि आपने देखा कि हाँ ये क्वेश्चन इस तरह से अटेम्प्ट किया जाता है, आपको ट्रिक सीखने को मिलती है, आपको कॉन्सेप्ट आता है बट ट्रिक्स नहीं आती। सो दिस सेशन विल बी प्योरली बेस्ड ऑन ट्रिक्स and that will help you ace the examination in a better manner. And in case you are looking for mock tests, so you can test our mock tests. So 3 of the mocks are, इसमें 3 free mocks भी है, ठीक है। So 3 free mocks हैं 10 में से, so you can take those 3 mocks, different different difficulty level के, so you can test yourself and see where do you stand, how good is your preparation. The link for them is given in the description of this video. So wish you all the best for CET. So don't think too much. Just rely on your preparation. जो आपने preparation की है उस पर भरोसा रखो, and just pray for your good luck, because it is too much about luck. कौन से slot में कैसा पेपर आएगा किसी को नहीं पता. Just try to give your best in the examination and leave the rest for your lucky charm that you get into the desired B schools.